पाकिस्तान के दौरे पर आई अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी और हॉलीवुड की नामवर अदाकारा एंजेलिना जूली ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया और आज उन्हें नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का विज़िट करवाया गया। एंजेलिना जूली ने इस मौका पर पाक फ़ौज की सैलाबज़दा इलाकों में खिदमात को बेहद सराहा। साथ ही साथ उनका कहना था कि जो तबाही इस वक्त पाकिस्तान में हुई है, दुनिया का इसको अंदाज़ा ही नहीं। आने वाले हफ़्तों में भरपूर मदद न पहुँची तो बचने वाले भी नहीं बच पाएंगे। ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला इन इंसानों में बेशुमार बच्चे हैं। मैंने ऐसी तबाही अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मुतासरीन को खुराक, शेल्टर, तिबी सहूलियात की हंगामी ज़रूरत है। पहले जब वो पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तानी अवाम को अफ़गान अवाम की मेहमान नवाजी करते पाया। आज पाकिस्तानी अवाम ख़ुद बड़ी कुदरती आफत का शिकार हैं। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, दुनिया को इस पर जागना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। एंजेलिना जूली ने इस मौका पर मज़ीद क्या कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। Coming, it's very much here, and even as somebody who's been a part of humanitarian aid for years, we often look at a crisis and we think of how to solve it, what we can do, what to rebuild, or how to help the children, or food. And now we're in a situation like this where it is, the needs are so great, and truly every effort is either life or death for so many people. Every current effort, and I've seen the Army, I've been with the Army and with my colleagues at IRC, and I've seen those lives who were saved, but I've also seen those who I've been speaking to people and thinking if enough aid doesn't come, they won't be here in the next few weeks. They won't make it. Too many children, so malnourished, and then even if they make it through these next months with the winter coming and the destruction of the crops and the hard reality, I'm overwhelmed, but I don't even feel it's fair to say that because I'm not living this. So I just simply try to speak out and help. I really can't imagine what it feels like to be there. I see the very thought out, beyond this, to not only the emergency, but what to do, and all that it's going to take. And I'm here as a friend to Pakistan and to the many warm friends and relationships I have here, and will continue to return. My heart is very, very much with people at this time.